for that I want to know how many of you have heard about insurance? What does it mean? Anybody wants to answer? Anybody like to? I think everybody must be having insurance policies. So what does that mean? Insurance means what? So basically insurance is a contract. It's a contract between two parties. One is insurer, another one is insured. So who is insurer and who is insured? Can anybody tell? Insurer and insured. Yes, ma'am. The party which So offers to bear the risk is called insurer, Yes. while the And party paying the premium is known as insured. insured, correct. Very good. Who gave this answer? Name, please. Ankur. Ankur. Yeah, right, Ankur. So it is a contract between the two parties. Wait a second. Yes. So it is a contract between two parties in which one is insurer. Insurance means the company from which you are taking insurance. That could be any insurance company. In consideration of the payment of a sum. Payment of sum, that means you are paying uh, some amount of rupees or some payment you are giving that company so that he can bear the risk of your risk, maybe for your life risk. We'll proceed when we proceed further, we'll go on all the terms like life. Your life is having some risk, so your risk will be shared by that party. You are sharing that risk with that party, that in case of some event, what would happen if suppose in case of death happens, so you are not there, but because your family has lost you, so the company will pay some amount for your if you have taken that insurance. So some amount family will get in case of that kind of event happen. So it's and when another party who is called the insured party, who that insured party is ready to pay specific amount which is mentioned based on the terms and condition, based on duration, based on the policy you are taking. So some is specified by the insurer, and insured person always pay the um, amount to the insurer. So the insurer undertakes to indemnify the assured for the loss on the happening or the event. If something happens to you, or suppose in case of your general insurance to your motor, your car or your scooter, something happens, and in that case the loss will be beared by insurer. So this is the basic definition of the insurance. Another thing is इंश्योरेंस एक cooperative device होती है. It's a cooperative device to spread the loss caused by a particular risk over a number of person who are exposed to it. Suppose I am not the only person who is taking insurance. There must be, just like I told you during the mutual fund, it is the fund where lots of people come with the small amount and pool their money. Similarly, in insurance also, suppose we consider one example of a village. So in that village, suppose there are 100%, and the company has seen that in these 100%, one person dies every year or in every 2 years. So if that 100 people, they go and suppose company is taking thousand rupees from that person. So what would be the chances? Company always work on the probability in that they decided how much should be the cover for that particular product and how many number of people they required for that particular. So everybody is, when they are giving thousand rupees, and there are 100 people, so 1 lakh of amount will be accumulate will be so 1 lakh of amount इकट्ठा हो जाएगा किसके पास? इंश्योरर के पास, कंपनी के पास. कंपनी will have the amount of 1 lakh rupee. So if in a case in the same year
from that 100 people, one person dies, so that 1,000 rupees will be given to that family, the family of that person. So this is how your risk is shared by everybody, because it is not that कि जिन्होंने भी insurance किया उन सभी के साथ mishappening होती है. There are different kinds. Suppose if we are talking about term life insurance. Term life means for whole term. Suppose I have taken 50 lakh rupees of term insurance. In the term insurance, what would happen? Suppose I am giving right now, if I am 30 until the age of 60, I want that particular 30 years ka I have taken that term insurance, and giving 5,000 rupees annually, suppose, and I at the age of 60, I will not get a single amount. In the case of term insurance means you are paying to the company, but you will not get anything in the return. But if you die, then suppose 50 lakh rupees ka aapka insurance tha, then that 50 lakh rupees will be given to your family. So it is the cooperative device in which everybody has paid. Those who are the part of that particular insurance, everybody has paid, but only 1 or 2% will get benefited if something bad has happened to them. So it is, we can consider is that as a cooperative device, because the loss, loss is only yours, but the loss, the possibility of loss is spread between the all the participants who have participated in particular kind of insurance. It doesn't reduce the risk. You can't say if you have taken insurance, then you nothing will happen to you. You will not die. It's not like that. It's just spread the risk. The basic thing of the insurance is it doesn't eliminate the risk. It doesn't reduce the risk. It just spread the loss between the people who are the part of that particular insurance. It does not alter the probability or possibility of the risk. Risk है ही नहीं. अब मैंने insurance ले लिया, so I don't have any risk. It's not like that. It's just spread the financial loss. Spread हो जाता है बाकी बहुत सारे लोगों के बीच में. So this is what insurance is. A contract between two party. One is insured, one is insurer. Insurer is the company. Insured is the person who has taken the insurance. Insured person is paying the amount. Insurance company will be liable to pay the sum assured. Sum assured is the amount. Sum assured आपने बहुत बार term सुनी होगी. Sum assured is the amount which you will get after a particular period of time, or in the case of mishappening. In the case of the death, event of the death, अगर किसी की death हो जाती है तो अगर 50 लाख की पॉलिसी थी, you will get that 50 lakh rupees. Either अब एक टर्म के बाद में आपको वो पैसा मिलता है. So it is just the case where insurer undertakes So the insurer undertakes to indemnify the assured for the loss on the happening of the event. Now, another one is what are the characteristics of insurance? So again, the very first term is risk sharing and risk transfer. So what does risk sharing means? The same thing, because it is a device, cooperative device, right? And it is share the financial losses which might occur to any individual, to any person, to his family, to at some point of some special event. So that time what happens? Maybe death ho gayi hai. So risk is transferred, risk is shared by, and risk is transferred from your side to company side. In case the death has happened, in case of life insurance, if the death has happened, so the whole sum assured amount will be given by the company to the person's family. So in case it is fire insurance, so if you have seen somewhere जहाँ fire लगती है तो maybe लोग कहते हैं कि लगवा दी होगी because of the insurance लेने के लिए, because the business में losses हो रहे थे. If you have
heard somewhere like this or situations होती है. अब movies में, हिंदी movies में we get to see कि अपनी factories को they burn out so that उनको कुछ insurance का पैसा मिल जाए. What is that? This is in case of fire, because fire insurance is also one of the product of insurance industry. That if fire has happened because of some short circuit or some accidentally it has happened, so after calculating the amount of loss, insurance company will give you amount for this insurance if you have done for fire insurance. The same case happens in the burglary insurance. Burglary insurance means if चोरी या डाका पड़ जाता है, कभी किसी ने अपने घर का पूरा इंश्योरेंस करवा के रखा है, सामान का इंश्योरेंस करा के रखा है, jewelry insurance होती है, तो they all are, they can also be considered covered under the insurance. Motors insurance, motor insurance में you see when किसी एक person की death हो जाती है, या इवन दो आपका व्हीकल होता है वो टूट जाता है, तो यू गो फॉर इंश्योरेंस. उतना पैसा सपोज किसी की स्कूटी में 20,000 रुपए लगना है, तो यू विल नॉट गेट दैट 20,000 डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी, बट एटलीस्ट यू विल गेट 15 to 16,000 रेस्ट यू कैन पे. So this is all your risk which you have transferred. You had the risk of driving. If you have the risk of your scooty loss or your bike loss, so what happens? You transferring your risk to other party. So this is the risk is transferred from one individual to a group. And why we are referring here is a group. Group means all the persons who are taking that kind of vehicle policy. Not everybody get accidents. So जब भी accident होता है तो from 10 or 20 or 100 में से we assume 1 or 2% का होता है. But we are every year we are also paying for our vehicle. But हमारे vehicle का accident तो नहीं होता है. So whatever amount we have paid, it's one time. If you have bike and you know that insurance in the motor vehicle, we have only one time. We pay and we forget. And it depends on कितना आपका value होता है. Suppose last year it was, and it also depreciate. जो भी आपकी amount है, suppose your bike was of 1 lakh rupees. So initially when you get 1 lakh rupees insurance, that time what happens? You might have to pay a good amount, like increased amount. Suppose 10,000 you are paying for your newly bought bike. And then what happens? Next year, the value of bike reduced to 80,000, suppose. Then again, your insurance amount, your insurance premium would also be decreased, and it will go to 8,000, suppose. So as your vehicle depreciated, by the time the amount of your insurance also get less by the time. So, but for and it is mandatory under motor vehicle act that you need to do insurance. Without insurance you have, अगर किसी के साथ हुआ हो तो होता है ना कि अगर इंश्योरेंस के पेपर नहीं है तो पुलिस आपको कैच करती है, ट्रैफिक पुलिस, दे stop you, and now the challan is also 5,000. So why this is? Because in case of either आपकी गाड़ी को चोट लगती है, आपको लगती है, या आपकी गाड़ी से किसी को लगती है, then the loss could be covered. कुछ ऐसा लॉस ना हो जाए, दैट इज द रीजन इट इज कंपलसरी कि आपको व्हीकल का इंश्योरेंस लेना चाहता है. सेकंड, अगेन cooperative device. Why it is cooperative device? Because single a group of person who agree to share the financial loss may be bought together voluntarily or through publicly or through agent call करके बोलते हैं, but you are there are large number of insured people. बहुत सारे लोग होते हैं, but the amount of loss will, if happen to somebody, one person, then the amount collected by all those insured will be given to that one person by the insurer. Insurance company अपने खुद के पास से तो देगी नहीं, वो कहाँ से देगी? That is the reason every, like in a day you get called 8 to 10 times you get called, ma'am we have a policy, ma'am we have new insurance is coming up, ma'am new ULIP is coming up. This is the reason they have their targets, because the larger the number of people in particular product, the risk will be bearing by large number of people, so they will get a good amount of fund to invest. And there are different categories where they invest, like just like fund managers in the mutual fund, they invest in different investment avenues. In the same way, nowadays like there are different categories, we'll discuss about it also.
So they invest your money. They don't keep your money safe. कि बस हमने पैसा ले लिया, wait कर रहे हैं कि somebody will die, then we'll give to that person. They deduct their charges also for keeping your money, and they invest it also. Now the calculates risk in advance. What does they do? The risk is evaluated on the basis of a probability theory. And the probability theory is what in it is the chances of likelihood. If you have heard in the statistics कि 0 और 1 की probability होती है कि either या तो head or tail का, if you have heard the example before in research methodology also this comes. आपने सिक्का उछाला, what will be the possibility of coming head or tail? What would be the probability? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बीच में ऐसे खड़ा तो नहीं हो जाएगा. That too is a rare incident, वो कभी होता नहीं है. So what is the probability of tossing a coin? It's a 1/2 possibility. Head can also come, tail can also come. So the probability is the probability theory tells us the likelihood of happening of the event, कि वो इवेंट होने वाला है तो उसके कितने चांसेस हैं होने के. Based on that, all insurance is based on that probability theory, कि कितना हमारा प्रीमियम होगा, कितना हमें देना पड़ सकता है, कितना हमारा लॉस हो सकता है, कितने % लोग, if they are buying life insurance, suppose the example I give you that village वाला, so 100 में से we are assuming that हमने पहले से देखते हुए आए कि 1%, मतलब 100 में से एक ही इंसान की डेथ होती है, so they are assuming 1% loss. So it is, so calculate risk in advance. We insurance company always calculate risk in advance कि कितना loss हमें हो सकता है. Based on that they decide the premium, also based on the tenure, कितने लंबे duration के लिए आपको वो policy रखनी है. Another point is payment of claim at the occurrence of contingency. Contingency means यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई certain event होता है, that if we are talking about life insurance, जहाँ पे death होती ही होती है, that is certain event, वो अगर होगा तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा. But in case of non life insurance, जैसे कि general insurance हो गया, जहाँ पे हम vehicle का insurance करते हैं, that is the case where the value of your insurance maybe you will not get. Why? They will assess, first they will assess loss, कि कितना loss हुआ है, then only they will process for the claim. They will not process for the claim कि ठीक है यार 20,000 का 30,000 की गाड़ी थी, मैंने तो 40,000 का करा रखा था, so I'll get that 40,000. No, it's not like that. So in the case of life insurance, person has died, so if he has 50 lakh insurance है, 50 lakh मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ डिडक्ट करके वो लोग देने वाले हैं आपको. But in case of non-life insurance, payment will be made only on the happening of that assessment कि कितना आपका losses हुआ तब उन्हें मिलेगा. Life insurance का claim तो certain है, it's certain because death होगी तो आप उसके लिए कोई expiry term या ये सोच नहीं सकते. हुई है death, you need to pay. So similarly, there are certain types of life policies जहाँ पे आपकी जो payment होती है वो for particular period के लिए होती है. Suppose I am talking about endowment plan. जैसे I talked about term life insurance. Term life insurance मतलब जब तक आपने लिया हुआ है, suppose 60 years तक लिया है या 70 years तक लिया, जब तक आप जी रहे हो, आपने 60 साल के लिए लिया, आपने तब तक पे किया. Coverage was for whole life. That means 60 साल की एज तक तो I paid premium. 60 के बाद सपोज आई डाइड एट 65, तब भी इन केस वो मुझे प्रीमियम का जो भी पैसा था मेरा सम एश्योर्ड वो मुझे मिलेगा. बट इन केस ऑफ एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि आई एम पेइंग 10,000 रुपीज एज अ प्रीमियम एंड आई सपोज आई एम टेकिंग 10 lakh का इंश्योरेंस. सो इफ आई डाई then 10 lakh will be given to my family. But if I don't die and I get that amount on 60 age I have crossed, I took for that 30 years. So at the age of 60 years, I will get that 10 lakh rupees का amount because that 10 lakh I have paid. मैंने वो पे किया था, उतना मेरा अमाउंट है, प्लस कुछ बोनस के साथ मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा. So basically endowment plan is the plan जहाँ पे हमें प्रीमियम हमेशा ज्यादा देना पड़ता है, उसके बाद हमें जो अमाउंट मिलता है सर्टेन टाइम के बाद वो हमें
प्लस कुछ बोनसेस के साथ मिलता है, बिकॉज जो अमाउंट, जो पैसा था वो आपका वो इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है. सो जो भी कुछ आपका उस टाइम पे व्हेन यू फिल अप द फॉर्म, यू साइन योर undertaking, there is mention, most of us we don't read full form or full terms and condition of any of the policy. In case of endowment plan, it is written that today if my money value is 1 rupee and I die today, I will get that 1 rupee. But if after my term finished, my duration finished, and my money value is only 2 rupee, I'll be giving you authority to give me 2 rupees only based on the market का जो भी return था, उस basis पे मुझे वो पैसा मिल जाता. That means आज और 30 साल के बाद अगर वो मनी मेरा 2 रुपए से 20 रुपए हो जाता, that is my profit. अगर वो 2 रुपए से 1 रुपए हो जाता, that will be my loss. आई एम एग्रीइंग, मैं उस पर एग्री करती हूँ एंडोमेंट प्लान्स के केस में, बिकॉज व्हाट आई चूज कि जब तक मैंने पैसा दिया तब तक तो दिया, और मैं मरा नहीं तो मुझे वो पैसा वापस चाहिए. अगर मैं मर जाता तो पूरा पैसा फैमिली को मिल जाता, दैट इज अनदर पार्ट. बट अगर मैं नहीं मरा तो मुझे वो पैसा मिलना चाहिए. बट इट डजंट हैपन इन केस ऑफ टर्म लाइफ. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म लाइफ एंड द होल लाइफ. Term life में you are giving, you will not get anything, whether you are alive or whether you are dead. You will not get. 60 year की एज हो गई, आपका कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आपकी डेथ हो जाती तो आपको मिलता. That in that case we are giving. But in endowment plan, अगर हमारी उतनी ड्यूरेशन में डेथ हो जाती तो उतना अमाउंट मिलता, बट नहीं मिला तो जितना हमने डाला प्लस some bonus amount will be getting. So this is called the endowment plan also. So this is the contingency, payment of claim at the occurrence of contingency, where we need to pay certain amount in case of some happening. Now amount of payment. Now amount of payment means the amount of payment depends upon the values of loss suffered due to the happening of that particular insured risk, provided insurance is there up to that amount. In life insurance, the purpose is not to make good the financial loss suffered. Life insurance में we are not going to make what has happened as a life is gone. एक life चली गई है, so we can only just compensate that particular loss financial loss has done, because suppose the bread earner, the person has suppose he is the ex person, he has parents also, he has children also, he is the wife also, and he is the only one who is earning member of the family. And when he died, so the loss is financial, because अगर वो होता तो वो कमाता और उस कमाई से वो घर चलता, because the financial loss is suffered. तो वहां पे आप एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, बट उस ह्यूमन बीइंग ने जितना अपना इंश्योरेंस कराया हुआ, दैट अमाउंट कैन गो टू दैट फैमिली, सो दैट वो उसकी भरपाई कर सकें, कि जितना वो रह करके कमाता उतना पैसा उस फैमिली को मिल जाएगा. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट. इन केस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस इट इज वेरी लेस, बिकॉज वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है. बट व्हेन दिस इज एंडोमेंट प्लान, वहां पे आपके प्रीमियम ज्यादा हो जाते हैं. So the amount of loss at the time of contingency is immaterial in life insurance. Life insurance में आपको प्रीमियम जो है वो थोड़ा थोड़ा पे करना होता है, क्योंकि जो लॉस होता है वो आपको बड़ा लॉस होता है. It's the you can't replace money with the person. But in the property or general insurance, the amount of loss or whatever is happening is required to be proved. हमें प्रूव करना पड़ता है. एक इंसान गया, ये सर्टेन हुई है, डेथ हुई है, तो अमाउंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा जितना भी आपने दिया हुआ था. बट इफ इट इज लाइक जनरल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, उस केस में यू नीड टू प्रूव कि मेरा कितना लॉस हो चुका है, देन ओनली विल गेट द पेमेंट. नाउ large number of insured person. So the price of insurance is basically linked to the cost of claims, which is only known subsequently. In the beginning, it is an unknown factor, and an estimate is made on the basis of past claims, experiences, and empirical data about the longevity of human beings. So as I told you, that village example, अगर 100 लोग थे और उस 100 लोगों में से एक की ही डेथ
ऐसे होती है कि भैया इतने ड्यूरेशन के बाद हो जाती है डेथ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू वी से लॉन्गेटिविटी ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स कि पहले हमारा जो हम लोग कहते हैं ना कि हम पहले 100 साल तक जीते थे, फिर हम अब कहते हैं कि यार 80s तक जिया करते थे। नाउ डेज पीपल आर सेइंग 65 तो मैक्सिमम कोई निकाल पाता, और कोई 80 का हो जाता है तो वी फील वेरी लाइक यार 80 इयर्स तक जी रहा है टाइप। So human being की longevity base, like when insurance company they launch some products, so before that they do lot of research based on that probability theory कि उनको कितना क्लेम करना पड़ सकता है, कितने नंबर ऑफ पीपल दे वांट इन पर्टिकुलर इंश्योरेंस, एंड कितना उनको फ्यूचर में अगर कितने परसेंट का फैक्टर है लॉस का फैक्टर, तो वो उनको उतना बियर करना पड़ सकता है। बिकॉज दे विल नॉट बियर, कंपनी विल नॉट बियर, इवन द कंपनी विल जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो डिडक्ट ही करने वाली है कंपनी। So they want the larger number of insured person in particular insurance companies के इसलिए तो बहुत ज्यादा फोन होते हैं, because they have target कितना तो हमें चाहिए ही चाहिए। So based on the past claims कि कितने परसेंट लोगों ने क्लेम डाला था in case of motor insurance, कितने एक्सीडेंट्स हुए थे, कितने आपके परसेंट रेशियो जो आपने निकाला था, कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया था, कितने लोगों ने एक्सीडेंटल प्लान के लिए किया था। बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड द नंबर ऑफ पर्सन कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए कितने ज्यादा लोगों की और पॉलिसीज करनी चाहिए, सो दैट हम लोग खुद लॉस में ना रहे। नाउ इंश्योरेंस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद चैरिटी और गैम्बलिंग। सो वी कांट से दैट द इंश्योरेंस के केस में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया है तो ये चीज होगी, ये नहीं होगी। इट्स अ काइंड ऑफ चैरिटी कि मैं तो किसी को दे रहा हूँ। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग कि मैंने जुआ टाइप्स लगाया और कुछ बढ़ के मिलेगा, घट के मिलेगा। इट इज अ प्रॉमिस बिटवीन अ कंपनी एंड अ पर्सन कि इतना अगर डैमेज हुआ तो मिलेगा, डैमेज नहीं हुआ तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। इट्स अ प्योर रिस्क, it is a pure risk. There are two types of risks, speculative risk and pure risk. So speculative risk, they are the business person जिनके पास जो business करते हैं वो लोग speculative risk को prefer करते हैं कि they think that business में loss होगा तो भी उनका, profit होगा तो भी उनका, but in case of pure risk लॉस ही लॉस होता है। प्योर रिस्क इज वेयर, जैसे हम अपना कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, डेथ होगी तो लॉस है, डेथ है लॉस है। फायर, आग लगेगी तो लॉस होगा, आग लगने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लॉस ही होगा। सो दिस इज द प्योर रिस्क। सो इंश्योरेंस it is the insurance is not a charity, it's not a gambling, it's a promise between two parties. Now the risk and insurance. Now the risk and insurance. So financial value, what is financial value? So the risk must involve a loss that is capable of financial quantification. That means you can only, which you can't quantify, that is not a loss for a insurance company. So which you can quantify, quantity में आप measure कर सकते, which is measurable कि कितना loss हुआ है. So the insurance is concerned only with the situations where monetary compensation is given following a loss. A loss or a damage of property may lead to a loss which is quantifiable. That means उसको आप quantity में measure कर सकते हो. In life insurance के अंदर तो हम नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि यार वाइफ का लॉस हो गया, हस्बैंड का लॉस हो गया, तो वहां पे हमारे लिए डिफिकल्टी है क्वांटिफिकेशन में. बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस व्हाट हैज हैपेंड दैट जो सम ऑफ मनी होता है, इट इज प्रायरली डिसाइडेड बाय पर्सन कि मुझे अपना कितना मैं अपनी लाइफ की कितनी वर्थ रखता हूँ, मैं कितना सोचता हूँ कि इफ आई डाई माय फैमिली की नीड्स एंड वांट्स पूरी हो सकती है या नहीं, बेस्ड ऑन माय पर्सनल कि मैं 10 लाख का भी ले सकता हूँ, मैं अपने आप को 1 करोड़ का भी मानूं तो 1 करोड़ का ले सकता हूँ, बेस्ड ऑन माय फ्यूचर नीड्स ऑफ माय फैमिली. दैट इज व्हाट वी
say in the life insurance. But in case of property insurance, what do we see? It is quantification. What do we do? We quantify कि इतने लाख की प्रॉपर्टी है, इतना तब था, अब कितना हो सकता है, कितना लॉस हुआ है. सो क्वांटिटी शुड बी देयर. तो फाइनेंशियल वैल्यू हम निकालते हैं. नॉन लाइफ इंश्योरेंस के केस में वी टेक आउट द फाइनेंशियल वैल्यू. नाउ होमोजेनियस एक्सपोजर्स, if there are thousands of people and properties having similar exposure, then the contributions could be comparatively small as the percentage of losses on the whole will decrease. So homogeneous exposure के केस में जब बहुत सारे लोगों को एक ही साथ एक ही तरह के लॉसेस होते हैं और उतना उनका प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया होता है, तो उस ड्यूरेशन में उनको उतने ज्यादा अमाउंट नहीं मिल पाता है. एंड इट हैपेंस वेरी रेयर. इट्स अ रेयर केस. ऐसा नहीं होता है कि भाई 50 लोगों ने इंश्योरेंस पर्टिकुलर लिया था, 50 के 50 लोगों के साथ में सेम हैपनिंग हो गई है. इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड ओनली विद द प्योर रिस्क. एज आई टोल्ड यू, प्योर रिस्क होता है जहां पे आपको जहां पे वेट अ सेकंड. So insurance is concerned only with the pure risk. So pure risk में you always have a loss. Am I audible? Okay. So pure risk के केस में you will only suffer losses. कि हाँ आग लगी है तो फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला. But speculative risk के केस में क्या होता है? Speculative risk के केस में अगर बिजनेस एज अ बिजनेस पर्सन है तो मैं सम गेन्स भी आई कैन एक्सपेक्ट एंड सम लॉसेस आल्सो आई कैन एक्सपेक्ट. नाउ फॉर्च्यून बाय फॉर्च्यून, fortune says fortune, so the fortune, the loss must be introduced. So what happens? Fortune ऐसा नहीं कि if I have taken 1 crore का पॉलिसी and I go and say कि भैया मेरा तो पॉलिसी एंड मैं किसी ने मुझे इनिशियली इंटेंशनली मुझे किल किया, तो वो चीज आपकी कभी भी नहीं होती. इट शुड बी ओवरऑल ऑन कंप्लीटली आपके कंट्रोल से बाहर होना चाहिए. मे बी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, इफ यू आर कमिटिंग सुसाइड तो आपकी वो पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाती है उस केस में. ऐसा नहीं कि आज आपने जाके 1 करोड़ का इंश्योरेंस यू आर बाइंग एंड देन यू आर सुसाइडिंग. So it should be entirely based on the fortune. As far as the person is seeking insurance, he should see this कि मैं अभी पॉलिसी लेके भाई अपने आप को खत्म कर लूंगा तो मेरी फैमिली को मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. इट शुड बी बाय डेस्टिनी कि वो चीज हो गई है, वो एक्सीडेंटली दैट हैपनिंग हो गई है. सो the frequency and severity of any risk must be completely beyond the control of that person. Now, insurable interest. The risk that is to be insured must result in some form of financial loss to the person taking insurance. So what we are saying here that जो भी रिस्क मेरा है, जो भी इंश्योरेंस में कर रही हूँ वो मेरा ही होना चाहिए. इट्स नॉट कि मैंने पड़ोसी की गाड़ी को इंश्योरेंस करा दिया और उसकी गाड़ी को आग लगा के खुद इंश्योरेंस ले लिया. यू शुड बी द ओनर ऑफ हाउस, यू शुड बी द ओनर ऑफ कार, यू शुड बी द ओनर ऑफ लाइक आप जब अपना कर रहे हो आप किसी और का नहीं कर सकते हो. ये इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल होता है, आपका अपना होता है. वो आप किसी का भी किसी और का नहीं कर सकते. यू कांट यूज अदर्स प्रॉपर्टी, यू कांट यूज अदर्स कार जिसको कि आपने फर्स्ट यू इंश्योर्ड इट एंड देन यू डैमेज्ड इट. ओनर की प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है. ऑल्सो इन केस ऑफ this is not allowed when you go for insurance for any other person's insurance. It should be under your ownership, not against a public policy. Public policy means here what do we want to say that एक common principle है कि suppose करो smuggling is not a good thing and it is a offensible crime है. वो एक कि मैं स्मगलिंग कर रहा था and then I lost my 2 kg of the gold, so मुझे उसमें इंश्योरेंस चाहिए. It can't happen. So it should not against public policy or legally accepted. वो illegally accepted होना चाहिए आपका.
कि हाँ आप जो भी चीजें करवा रहे हो that comes under that particular policy, that comes under the legal under the law of our country, it comes under the, तो ऐसी कोई भी चीज आप ऐसी कोई भी पॉलिसी को या आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते, ऐसी किसी भी चीज को यू कांट गो फॉर द इंश्योरेंस जहां पे आइदर वो आपकी अपनी नहीं है, दूसरा वो पब्लिक पॉलिसीज या आपकी कंट्री के लॉ के अगेंस्ट जाता है. नाउ risk and insurance. So this already we have done. Risk and insurance is concerned only with the pure risk. All pure risk are insurable, but speculative risk on the whole are not. By fortune होना चाहिए. The frequency and severity of any risk must be completely beyond the control of person होना चाहिए. The life insurance is, however, still with now insurance sector supports the financial system in several ways. So it accepts the risk from people and corporate bodies who are exposed to them. Just like in financial system, क्या होता है कि एक particular person risk में ना होकर के जो corporate bodies होती है वो people का risk अपने ऊपर ले लेती है. Or when they have that huge amount of money, obviously when they go and invest in some sector or some in investment avenues, it obviously give some money or give some amount to financial system in the country. So it collects the small amounts of premium, छोटे छोटे लोगों से छोटा छोटा premium they collected, and then the together जब वो इकट्ठा होता है तो in mutual fund we call it mutual fund, in insurance fund we call it insurance fund, because छोटे छोटे से लोगों से किया जाता है, that is used for the investment purpose. So in a way money का outflow हमारी साइड से हो रहा है, but in financial system it is inflow, पैसा वहां पे आ रहा है. So it boosts up the economy. It organizes compulsory insurance in certain areas as the provisions of the law. Just I told, motor insurance लेना, motor vehicle act के according motor insurance लेना, आपके vehicle का insurance लेना is a compulsion. So वो एक punishable offense है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ट्रैफिक पुलिस में. Now it sells voluntary insurance covers through its sales force. जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू आपको इंश्योरेंस पे करने के लिए फोर्स करती है. सो इन अ वे दे आर हायरिंग पीपल आल्सो, and when they are hiring people are generating revenue. In a way they are also a part of financial system, because anyway they are taking money from the people, giving it to the company is giving it to the company is investing in some markets. So in a way the money given by you is automatically reaching to the financial system, which strengthens the financial system. Now it settles claims arising out of insured loss. आपका जो भी क्लेम का सेटलमेंट होता है उससे अगर आपको क्लेम का सेटलमेंट मिलता है, नाउ यू आर गेटिंग मनी, इफ यू आर गेटिंग मनी यू आर स्पेंडिंग मनी, अगेन इन अ वे इट इज गोइंग टू द फाइनेंशियल सिस्टम. सो इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ very important part of financial system. So neither the insurance company nor the insured are allowed to make profits out of the insurance. Nobody is allowed to make profit, कि आप profit नहीं कमा सकते उससे. Just like mutual fund में you expect return so much, but nowadays there are policies just like ULIP, will go through this later. ULIP के ऊपर भी आपको क्या होता है कि कुछ आप you agree कि हमको ये भी चाहिए साथ में, because it is the like दो पॉलिसीज को मिला के वो एक बना दिया गया है ULIP.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस को भी मिला दिया गया उसके अंदर, प्लस उसमें आपका म्यूचुअल फंड को भी डाल दिया गया. सो इफ द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स अ सरप्लस आफ्टर मीटिंग क्लेम्स, it distribute it among its policy holder in the form of bonus or the reduction in the premium. So जो भी अगर पैसा इन केस मार्केट में लगाया हुआ है और एक्स्ट्रा ही आता है तो इन द फॉर्म ऑफ बोनस और प्रीमियम इट नीड्स टू गिव इट टू the person. Company can't make profit. Whatever profit is generated over the time period, it needs to give back to the customers. It follows the principle of Indian Contract Act, which helps to prevent its misuse or abuse. So there is IRDA also, Insurance Regulatory Authority, which keeps eye on all these things. Companies कितना पैसा ले रही है, misuse तो नहीं हो रहा है, all these things. It is in the Indian Contract Act जिसके through पता चलता है कि भाई कहीं फ्रॉड तो नहीं है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का. नाउ द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, क्या बेसिकली क्या फंक्शंस है हमारे इंश्योरेंस के. फर्स्ट थिंग, इट्स प्रोवाइड सर्टेनिटी. हमारी लाइफ में कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए वी विल बी लाइक a person who is having insurance plan, and if he met an accident, then if disability आ जाती है, there are different kind of insurance जहाँ पे disability आ जाती है, आपकी इनकम का लॉस हो सकता है, you could be bedridden for a long time. So in that case आपको एक certain amount मिलता है. So it provides you protection also कि अगर मैं नहीं हूँ, वो आता है ना एक एडवर्टीजमेंट, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. That means when you are alive, it is providing a sense of responsibility to you कि यार मैं अगर मुझे कुछ हो जाता है then my family will get benefited after. उनका कुछ ध्यान रखने वाला होगा, कोई उनको पैसों की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की. मैं नहीं हूं तो भी उनकी सारी फ्यूचर नीड्स फुलफिल हो जाएगी. So this is how it provides the protection to your family. Now it helps prevention of losses. Yes, when you are in a condition जहाँ पे आप अगर not only life insurance, because it is a function of insurance, general insurance में जैसे कि आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा दी एंड किसी भी नेचुरल बाढ़ आ गई, बाढ़ के केस में आपकी पूरी प्रॉपर्टी जैसे चली गई तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा. सो आपने अपने लॉस को प्रिवेंट कर लिया, यू हैव प्रिवेंटेड योर लॉस कि यार मैंने अपनी चीज का कराया था. गाड़ी है आपकी, कई बार एकदम न्यूली बॉट कार होती है, किसी की एक्सीडेंट में बिल्कुल खराब हो गई तो ऑलमोस्ट अगर 10 लाख की कार है तो ऑलमोस्ट उसको 8-9 लाख के आसपास दोबारा से मिल जाता है. तो वो प्रिवेंट ऑफ लॉसेस है कि आप लॉस होने वाला था बट यू हैव प्रिवेंटेड दैट लॉस. नो हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस हो गया. शेयर्स रिस्क एज इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. तो आपका भी रिस्क क्या है, दो यू आर पेइंग योर अमाउंट बट द थिंग 50 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल रहा है इफ यू आर पेइंग 5,000 ओनली. And till the time, like suppose you are taking 10 years ka and you are paying 10,000 annually, so how much you have paid? 1 lakh. But if you died, suppose you died after 5 years, तो आपने कितना पे किया था? 50,000, but your family is getting 50 lakh, so it shares the risk. वो 50 lakh आपका तो नहीं था but still you are getting. that means कहाँ से आया वो और बहुत सारे लोगों ने जो पैसा डाला था वो आपको कंपनी ने दिया. कंपनी अपने पास से कुछ नहीं देती है. सो इट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ द रिस्क बिकॉज यू आर पेइंग लेस बट इफ समथिंग हैज हैपेंड टू यू देन your family is getting more. So it is the sharing of risk. It helps capital formation, yes, in the case of endowment plan, in the case of ULIP, in the case of there are more kind of policies where like child care plan, retirement plan, these all are the plans where your capital is building over period of time because you have taken the plan where you are saying अभी मैं पे कर रहा हूँ. सपोज आई एम 20 years old, till the time 60 I will be pay because I will be working. मैं जॉब पे रहूंगा तो मैं पे करूंगा. But once I take retirement, that 40 years तक whatever I have paid, the company invests that particular amount in the investment policies, investment different avenues, equities में डालती हैं. And then after 60 you stop paying your premium, you start getting your premium in the form of installments. And वो जितना भी पैसा आपने पे किया था वो प्लस जितना आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बोनस मिला, जितनी भी आपकी वैल्यू बढ़ी वो आपको वापस मिलेगा. सो इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो. सो व्हाट इज इट इज गिविंग यू this kind of policies gives you
two things. If you die in between 60 years से पहले you die, so what will company give you? Company will give you plus जितना भी आपका sum assured था, plus जितने भी आपके bonuses थे. If you don't die, then company after your age of once you achieve your age of 60 years, after that company will give you back retirement planning में. This is what happens. So this is covering your life also. Cover तो हो ही गई है आपकी life. Second thing, आपको अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको पैसा आपका दोबारा से मिलना शुरू हो गया, दो उस मनी की वैल्यू बहुत लेस होगी. रीजन बीइंग, इफ यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो एंड व्हेन compare it with another investment which you are invested in, some investment equities में लगाया या mutual funds में लगाया, if you compare that amount in the ULIPs will be less as compared to other investment avenues. So this is not a very good option to buy other type of investment, other type of insurances. Now there are two parties in this contract, right? So what are the rights of insurers and what are the rights of insured? So these are the rights of right to collect premium from the insured. अगर मैंने पॉलिसी ली है and if I have signed a document, so if I am taking monthly plan, quarterly plan, 6 monthly plan, so I need to pay that amount to that company. And for sometimes every company has different options that 3 महीने का लगातार नहीं भरा या 6 महीने नहीं भरा तो पॉलिसी आपकी forfeit हो जाएगी, you will not get anything kind of. These are the terms and conditions written in every policies के last pages पे होता है. So the right to collect premium from the insurer. So this is the right of an insurer कि वो पैसा उससे लेगा. Right to specify the rules and conditions that govern the promises made under the policies. So he can, so insurer can specify that these are the rules, these are the conditions. If you agree to those conditions, please sign it and start paying me. If you are not following these things, then we will not, if we are not coming to one agreement, because agreement is what? When you, both parties are agree to something. So if suppose you are buying one health insurance, in that health insurance, if you are hiding something, suppose you are hiding your family history of diabetics, and you have signed that paper that I don't have any history of diabetes, but when you are going, suppose after 6 months of the buying a policy and you went to the hospital, and what happened to you? Suppose you got some major disease due to this diabetes, and then you are thinking that you will get health benefits which was mentioned in the policy, and you will call your health insurance person. So what the company can deny ki, sir, if you have not written your history, your family history, you have not agreed on that particular term, so now we can't, because you have hidden something from us, we can't give this benefit to you. But if in case आपने लिख दिया कि okay मेरी family में cancer की history है, and that other party also signing and issuing you that policy, उसने issue कर दी, that means उसको पता है and he agreed. And अगर आपको तब cancer निकलता है और उस case में you will go to hospital, so all the charges or all the expenses will be bear by the company because he has agreed on that. But in case where you have hide something from that company, आपने नहीं hide किया, but at this after 6 months what happened, उनको पता चल गया, how you are giving your reports कि ये मेरी रिपोर्ट है, I am hospitalized from last 3-4 days now, मुझे पैसे चाहिए या मेरी पॉलिसी को आप ना मैंने क्लेम डाला है और आप लोग क्यों सेटल नहीं कर रहे हो, लाइक दैट. सो कंपनी विल हैव अ राइट कि आपने हमसे चीजें छुपाई थी, so we will not settle your claim. So they will have one reason not to settle your claim. So whenever go for policy, never hide your things. Whatever you know, you can write it, because you are signing one document, and which is the legal agreement between you and that another party. So there is now third point is responsibility to pay for the losses occurred and claimed by the insured. It is the responsibility of a insurer. What he needs to do कि जो भी claim इंश्योर करेगा उसे पे करना पड़ेगा, बट द कंडीशन इफ यू हैव एग्रीड ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस. जैसे डायबिटीज के केस में वो आपने गलत साइन किया, आपने झूठ बोला, आपने छुपाया, सो दैट दे कैन डिनाई.
So whenever go for any policy buy करना होता है, तो if you know that policybazaar.com, so if somebody is buying policy, it is the very basic thing. If you are choosing any company, की कौन सी company choose करनी है, which is good, so always check claim settlement ratio. There is one option कि किस company का claim settlement ratio अच्छा है. That means ऐसा तो नहीं, suppose मेरी 50 लाख की policy and I died and my children are not getting anything, I will not come and fight legal fight against them कि यार आपने बोला था मुझे चाहिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, because I wouldn't be there, मैं तो नहीं रहूंगी ना. So we always going for any company, what you need to do, you just need to check claim settlement ratio. Now the rights of the insured. Obligation to pay the premium to the insurer. अगर मैंने किसी कंपनी की पॉलिसी ली है तो I need to pay the amount. Right to collect payment from the insurer if a covered loss occurs. अगर जो भी losses covered थे मेरी पॉलिसी के अंदर, if it has happened, तो मेरे पास ये right है कि मैं उससे जाके मांगूंगा. जैसे कि now what happened in the COVID, बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर में कोविड था नहीं, people got hospitalized for 3-4 months और उनका बिल 5 लाख तक आया, तो कंपनीज डिनाइड कि हम तो पे नहीं करेंगे बिकॉज कोविड इज अ न्यू डिसीज एंड इट वाज नॉट कवर्ड, एंड देन कंपनीज लॉन्च कोविड प्रोटेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स कि अब अगर आपको कोविड होगा तो हम लॉन्च कर रहे हैं. सो कंपनी डिनाइड. सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज वेरी मस्ट फॉर assessing any company's feasibility to help customer. आप जब जा रहे हो और आपके साथ में कैसा हो रहा है, based on that past experience you can go. So here comes the insurance policies, or you can say insurance product. Basically, there are two: life insurance, non-life insurance. Life insurance में term insurance, I told you क्या होते हैं. Endowment insurance, money back also. कि money back basically is the child protection plan. क्या after 5 years अगर मैंने ये choose किया है कि अगर मेरी बेटी today is in first class and I am seeing कि 10th class के बाद I want कि she will go to the IIT coaching. So or 12th class she will go to out of India to for some foreign university. So money back policy I will choose. After 5 years I want this much money, after 10 years I want this much money. So the money I am giving to insurance person, they put the money into the some market and then they will give me money back after some time. So term insurance is the purely insurance, life insurance, pure life insurance, where the amount is very less, but you will not get that money back again. If you die, then only your money will be given to your family. But other plans, endowment plan, money back plan, whole life insurance, variable insurance, unit linked, जो कि ULIP मैंने आपको बताया, retirement pension, all these money are the plans where your money will be invested in equity. You will get after some time. If you die, life की coverage भी है, plus आपका पैसा जो आपने लगाया उतना, plus थोड़ा बहुत bonus जो भी वो आपको आएगा. So it can come. So these also comes under the life insurance, but it is not pure life insurance. Only term insurance is the pure life insurance. Now there are non-life insurances also. Health insurance is there, critical illness insurance. Now critical illness is just like cancer. So if due to your family history you have seen कि किसी दादाजी की हुई थी, किसी की मदर की, फादर की हुई थी. So when you are buying a critical illness insurance, the moment you got diagnosed कि मुझे भी ये चीज है, what will happen, that company will give you that amount. कि suppose करो मैंने ये critical illness insurance ले लिया था और मैंने suppose 4 लाख 5 लाख का लिया, तो the moment I get कि मुझे पता चला कि मुझे बीमारी है, so the amount will be settled by that company. Personal accident insurance, personal accident जो accidental insurance हम buy करते हैं in case of accidental death, इतना पैसा मेरे परिवार को मिल जाए. Travel insurance, property insurance, liability insurance. So there are different kind of insurances. Now the insurance planning process. What is the insurance planning process? First you need to identify risk protection need. आप कितनी need में हो. That means I gave you the example of a boy. If a boy मम्मी पापा है, wife है, non working है, बच्चे हैं, so उसकी needs क्या होंगी कि if I am working today with the 1 lakh of the per month salary और मेरी आने वाले फ्यूचर में डेथ हो जाती है, तो मैं कितना प्रोटेक्शन, कितनी नीड्स मेरी है कि फ्यूचर में मेरी फैमिली को जो मैं आज कमा रहा हूँ मेरे ना होने पर भी वो मिलता रहे. सेकंड इज
एस्टिमेट इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड, इट इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगेन, जहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि अगर मैं 30 साल तक 60 साल, अगर राइट नाउ आई एम 30, सो मैं 30 साल की उम्र तक कितना कमाता, कितना परसेंटेज मेरा बोनस या इंक्रीमेंट होता, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि कितना हमें लेना चाहिए, कि अभी से मैं कितना सेव करना शुरू करूं, या मैं 1 करोड़ की पॉलिसी लूं, 50 लाख की पॉलिसी लूं, उस 50 लाख की पॉलिसी का क्या मैं प्रीमियम पे कर सकता हूँ। Now the step third is develop insurance plan. तो आप देखोगे कि आप फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना है, हेल्थ प्लान लेना है, किस कंपनी से लेना है ना। फोर्थ स्टेप इज प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस सिलेक्शन। आप सिलेक्ट करोगे जाके कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, या फिर यूलिप में जाना है, मुझे कौन सी कंपनी लेनी है। फॉर दैट कंपनी आई टोल्ड यू क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिए जा करके। So which one you want, you choose product, you first you choose your company and then you choose your product. मुझे इस कंपनी का लेना है और इसका ये वाला प्रोडक्ट लेना है, then implement, then buy, go fill up the form, sign it, take your policy, and then by the time to time review your policy कि अभी market की demand क्या है, because most of the people have taken non covid, किसी के पास नहीं था, अभी new covid market में आइए, people are buying that kind of. So these are the insurance planning step where you need to assess first. Every planning step is your assessment first. So you just identify your needs. नीड क्या है आपकी, क्या इंश्योरेंस का कवर चाहिए आपको, कितने इंश्योरेंस प्लान लेने पड़ेंगे, कौन सी कंपनी से लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योरेंस प्लानिंग में देखनी होंगी। Is my screen still visible? I think. So, all right, class. Yes, ma'am. That's for the day. My screen was visible, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you all. Bye. Okay, ma'am. Thank you.